Okay, so I will keep this link in your sheet. Those who have not joined, I think they can just watch the lecture later on. ठीक है, चलेगा ना वैसा? जो वो वाली शीट है ना रिकॉर्डिंग्स वाली, उसमें मैं कॉपी कर दूंगी या तो क्लास में ही और रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दूंगी. सो दोज हु हैव नॉट जॉइन दे कैन see the lecture. Fine. So let me start with the laser. See, in the laser, the first question is the quantum mechanical effect during the production of the laser light. Right? The quantum mechanical processes that are involved during the production of the laser light. So what are that process? Spontaneous absorption, spontaneous emission and the stimulated emission. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इट कैन बी ऑफ 5 और 6 मार्क्स. फाइन. सो तीनों इंडिविजुअली तीनों प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी है. व्हाट इज एब्सॉर्प्शन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन अलोंग विद द एग्जांपल. राइट. Then after short question में what is the advantage of laser, what are the advantages of lasers, what are the principles of the lasers, ये questions जो है they can be of 2 marks each. Right. Population inversion क्या होता है, right? What is population inversion? You may be asked to explain. Right. उसके बाद the next question can be of optical resonator. Right. Explain with a neat label diagram the construction and working of an optical resonator. Yeah, explain the Fabry-Parrot interferometer assembly for the production of the laser light. Right? Fabry-Parrot interferometer assembly मतलब आपको optical resonator ही explain करना है. उसमें 5-6 figures are given. So means it's not necessary to draw all that figure, only 3 figures will do. Right. वो जैसे एक rectangle जैसा है और उसमें पहले सब host ions are sitting and the radiation is falling, light is falling on it. फिर जब light गिरती है उसके बाद excitation से different directions में photons होते हैं and third figure में the photons in the same direction and you have to write the condition also. Condition during the production of the laser light, right? 2L is equal to m lambda. Yeah, you can say that when the number of photons emitted is equal to number of photons build up in an optical cavity is equal to the total number of photons that are moving out, that are lost. Right? दोनों numbers जब same होता है तब because of the resonance the ultrasonic waves are produced. The laser is produced. Right? So this can be the next question. कि Fabry-Parrot interferometer assembly. फिर derive the rate equations. Okay, so rate equations के लिए आपको या relations between the Einstein's coefficients and the rate equations जो हमने derivation लिया था, okay, 2-3 स्टेप वाला वो assumption करके, तो उसमें आपको वो derivation लिखना है. You need to derive that. Then you can be asked the important component of laser action. Okay, explain the important component of the laser action. Yeah, important components involved during the laser action. So in that case, you will be writing the population inversion, metastable state, optical resonator. Okay, ये 3 जो कंपोनेंट्स है दे आर, बिकॉज देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो लेजर लाइट प्रोड्यूस नहीं होगा. राइट. सो यू रिक्वायर दी population inversion to get the laser light. फिर metastable state चाहिए and then you require the what you say the optical resonator या resonant cavity. Right. तो active medium रह गया. Okay, and active medium. So these are the things that you need to explain, and I think you know what is an optical resonator, what is an active medium. Okay. Then after different pumping methods, right? Explain pumping methods, right? So pumping methods में
या पंपिंग मैकेनिज्म, पंपिंग मैकेनिज्म में ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग and the direct conversion phenomenon, right? So these three types of pumping you need to explain. 3 marks में आ सकता है. Okay, explain different pumping mechanism. फिर pumping schemes. Pumping scheme में आप लोग क्या लिखोगे? 3 level pumping and the 4 level pumping. वो energy level diagram के साथ आप लोगों को explain करना है. Pumping scheme and pumping mechanism. पंपिंग मैकेनिज्म में वो प्रोसेस, ओके, ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल ने डायरेक्ट कन्वर्जन, एंड पंपिंग स्कीम में यू विल बी एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट? 3 level एंड द 4 level पंपिंग स्कीम्स. उसके बाद explain the construction and working of a ruby laser और helium neon laser. ठीक है, एक तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. सो व्हाट यू विल राइट इन दैट, फिगर ड्रॉ करना है और कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से पहले थोड़ी हिस्ट्री, राइट? रूबी वाज इन्वेंटेड बाय XYZ साइंटिस्ट इन सो एंड सो ईयर, राइट? एंड देन आफ्टर व्हाट अ रूबी क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ, फिर उसका जो लेजर का जो डायग्राम है वो, ओके, it consists of the alumina, right? It consists of alumina and chromium. Iron chromium are the active centers, etc., etc. फिर xenon flash lamp होता है, Y flash lamp, and what wavelength you are getting. वर्किंग में एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है. ओके, वर्किंग ऑफ अ लेजर सिस्टम इज एनर्जी लेवल डायग्राम का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, देन उसके एडवांटेजेस, एक दो एडवांटेजेस और एक दो डिसएडवांटेजेस. दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर. हीलियम नियॉन है तो हीलियम नियॉन का आपको एक्सप्लेन करना है हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग में एनर्जी लेवल डायग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, right? Sometimes explain the laser that gives you the discrete output, that gives you the pulsed output. Discrete or pulsed, both are same. Okay, a laser system that gives you the pulsed output, the discrete output. तो वो केस में आपको रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करना है. कभी क्या होता है, मेंशन नहीं किया होता है विथ नीट लेबल डायग्राम, बट इट इज अंडरस्टूड कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा है तो यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो. और क्वेश्चन पेपर में जो है ना, मतलब सब्जेक्ट के नीचे 4-5 इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, तो इंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ होता है ड्रॉ द डायग्राम, नीट डायग्राम वेर एवर नेसेसरी. ओके, सो कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करते कि एक्सप्लेन इट विद अ नीट लेबल डायग्राम, बट इन दैट केस यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो. जहां भी डायग्राम है यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, सो रूबी का एक ऐसे भी द लेजर आउटपुट दैट गिव्स यू द डिस्क्रीट आउटपुट और पल्स्ड आउटपुट, या the laser system working on the 3 level pumping mechanism. ओके, इतने क्वेश्चंस रूबी में से आ सकते हैं. रूबी लेजर में कंस्ट्रक्शन वर्क एंड वर्किंग ऑफ ए रूबी लेजर सिस्टम विथ अ डिस्क्रीट आउटपुट, पल्स्ड आउटपुट, या द लेजर सिस्टम वर्किंग ऑन अ 3 level pumping scheme. उसी तरह हीलियम नियॉन के लिए लेजर सिस्टम वर्किंग ऑन अ 4 level pumping scheme. The system that works on the 4 level pumping mechanism. The laser system that gives you the continuous output. Okay, because helium neon gives you the continuous output. Yeah, construction and working of any one gaseous laser system. Helium neon is a gaseous laser system, right? So it can be asked the example of a gaseous laser system. Yeah, sometimes the first solid state laser, तो वहां पे आपको रूबी लेजर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर. ठीक है, तो 3-4 तरीके से
the question can be asked for both the system Ruby and the helium ion. उसके बाद वाला जो नेक्स्ट है होलोग्राफी, होलोग्राफी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है. ओके, प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफ. ओके, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, हाउ इट इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन. ओके, सो यू नीड टू एक्सप्लेन होलोग्राम, फिर उसका कंस्ट्रक्शन एंड देन उसका वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, एंड न्यूमेरिकल्स तो आपको पता है. ओके, यू नीड टू राइट द डेटा. ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, वी आर आस्किंग यू एज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, राइट. सो सीधा आपको बिना फॉर्मूला लिखे स्टार्ट नहीं कर देना है. यू विल बी राइटिंग द डेटा दैट इज गिवन टू यू. ओके, जो भी डेटा आपको दिया है वो आप लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, you will substitute the values in the formula, and then you will come with the answer along with the unit. Okay, whenever you solve the numerical, no, you have to write the answer along with the unit. Okay, so this was about the first chapter. Is it okay? मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस जिस तरह से पूछा, मतलब इट कैन बी आस्क्ड, आई हैव टोल्ड यू. उसमें आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, दैट आल्सो आई टोल्ड यू. ओके, ओके फाइन. नाउ गोइंग टू द सेकंड चैप्टर, फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स में एडवांटेजेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ओवर द ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, over the metallic cable, the communication done by the metallic cable, right. ये question frequently, मतलब sometimes it can be asked in many of the question paper. You can find this applications of the optical fiber cable. Okay, then after, the principle on which the optical fiber cable works, ये छोटे छोटे questions. Okay, total internal reflection और total internal reflection कैसे होता है, the incident angle has to be greater than the critical angle, etc., etc., right. Then after, how the communication is done by an optical fiber cable. No advantages of optical fiber cable. Then advantages, principle, different parts of an optical fiber cable. Okay, core, clade, and the buffer jacket. Fine. Then after, directly derivation of the acceptance angle, derivation of the numerical aperture. Right? The relation between the relative refractive index and the numerical aperture. Okay, derive the relation, derive the equation showing your formula showing relation between the numerical aperture and the acceptance angle, right. छोटा सा जो हमने derivation लिया था by applying the Snell's law at the medium and the core interface, core and the cladding interface, and then simplifying it, we'll get the equation for the formula for the numerical aperture या acceptance angle, right. Derivation के बाद classification of an optical fiber cable, right. So there are two categories, मतलब in whole there are three categories based on the materials, with based on the number of modes passing through the core, and the third one is the based on the index profile, right. These were the categories. So उसमें जो questions आ सकते हैं, short note on optical fiber cable, या simply write a short note on the different types of optical fiber cable. So उसमें आपको क्या करना है, ये जो पहली और फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है ना, वो शॉर्ट में लिखनी है, and you need to elaborate the SMSI and MMSI in green. Okay, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, but then also if it is asked first or second category, दो तीन लाइन में लिखनी है based on the material and based on the modes, single mode and multi mode. What is single mode, what is multi mode, right. And then after, just 1 minute. हेलो, हाँ बोलो पार्थिव. ઓહો, કયા નંબર છે? હું તમને મોકલાવું લેટેસ્ટ રોલ કોલ્સ.
હા હા, અને એન ડિવિઝનમાં છે ને આ લોકોને 31 તારીખ આપી છે, આપણે ચેન્જ નથી કર્યું, એટલે લેટ સબમિશન ન લેતા, લઈ લેજો એમના LMS ઉપર. હા બસ 31 જાન્યુઆરી આપણે એમને આપી હતી. વાંધો નથી આવ્યું. ઓકે, હું તમને રોલ નંબર મોકલાવી દઉં છું. લેક્ચર ચાલે છે ને, લેક્ચર પતાવીને મોકલાવું. શ્યોર શ્યોર, મોકલાવી દઈશ હું તમને. આખી શીટ જ છે, એમાં તમને બધા જે જોઈતા હશે બધા જ મળી જશે. ओके हाँ. तो क्लासिफिकेशन उसके टॉपिक में you can be asked the difference between the single mode optical fiber and multi mode optical fiber. ठीक है, सपोज सिंगल मोड और मल्टी मोड पूछा है तो उसमें आप क्या लिखोगे डिफरेंस में. ओके, व्हाट इज सिंगल मोड, व्हाट इज मल्टी मोड. ओके, एडवांटेजेस ऑफ सिंगल मोड, एडवांटेजेस ऑफ मल्टी मोड, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल मोड, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी मोड. फिर सिंगल मोड में एसएमएसआई आता है, right? Multi-mode में you will have MMSI and green. Okay, this type of comparison you need to do. Yeah, explain the single mode and multi-mode optical fiber cable. So उसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा सिंगल मोड और मल्टी मोड में, राइट. फिर नेक्स्ट में जो है डिफरेंस बिटवीन दी MMSI एंड SMSI, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर. पहले तो व्हाट इज MMSI, व्हाट इज SMSI. ओके, फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, कांस्टेंट होता है. प्रोफाइल कैसा होता है, वो एक ही लाइन में प्रोफाइल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, राइट. उसके बाद MMSI में आपको लिखना पड़ेगा मल्टीमोड स्टेप इन, नहीं वो नहीं आएगा. उसके बाद यू कैन बी आस्क्ड डिफरेंस बिटवीन दी MMSI एंड ग्रीन. Okay, multi-mode step index fiber and the graded index optical fiber, right? So same thing, advantages, disadvantages क्या है, refractive index कैसा होता है, profile कैसा होता है. Okay, और as a whole, short note on the optical fiber cables based on the index profile. तो वहां पे आपको दो कैटेगरी है, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स. स्टेप इंडेक्स में SMSI MMSI आता है, ग्रेडेड इंडेक्स में ग्रीन आता है, राइट. तो उस हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. यू नीड टू ड्रॉ द फिगर ऑल्सो, छोटी सी पेन से ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा, राइट. और देन आफ्टर एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लिंक. ठीक है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लिंक, वो ब्लॉक डायग्राम के साथ 3 स्टेप में. पहला ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में क्या क्या आता है और सबका फंक्शन क्या है. सेकेंड में वो प्रोपोगेशन वाला मतलब एम्पलीफायर, सो व्हाट इज एम्पलीफायर और उसका फंक्शन क्या है. एंड थर्ड में रिसीवर, रिसीवर क्या है, क्या क्या आता है और सबका फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है अलोंग विद द डायग्राम. ओके, मेंशन नहीं किया है तो भी यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट. ओके, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर सेंसर, ये तो सीधा ही होगा नाम के साथ ही. एक्सप्लेन दी फोर्स ऑप्टिकल फाइबर सेंसर या प्रेशर सेंसर या समटाइम्स लिक्विड लेवल सेंसर, एक साथ दो सेंसर्स आते हैं 5 मार्क्स में. ओके, so yeah, explain any intensity modulated optical fiber cables, optical fiber sensor, phase modulated optical fiber sensor, ऐसे डायरेक्टली ही लिखा हुआ आता है. तो फिगर ड्रॉ करके you need to explain it. Okay, so again optical fiber is a small section. Okay, so जितने भी questions उसमें से आ सकते हैं, I have just given you different type of question and numericals तो है ही. Okay, optical in optical fiber also you will be having the numericals, so you will be solving it, right. ठीक है, any query still here? No, fine.
Now, physics of nanomaterials. If I go to the first part में what is a wave function? Characteristics of a wave function. What do you know about the normalization? Yeah, what is a normalized condition? Right. Then after ये भी यहाँ भी straight forward equation होते हैं, derive Schrodinger's time dependent and independent equation. Dependent equation, independent equation को steady state equation भी कहते हैं, right? So explain steady state equation. Okay, ऐसा भी but straight forward होगा, इसमें कोई twisting possible ही नहीं. Okay, then after a particle in a box की theory, right? So वहां पे थोड़ा twisting हो सकता है. Say for example, I have a particle which is confined in a ball, which is confined in a box. The length of the box is A. Derive the equation of energy for a particle confined in a box of length L. या sometimes कोई freely falling body है, right? Freely falling body को confine कर दिया है, कुछ width आपको दी हुई होगी, and for that you will be asked to derive the normalization condition. ओके, सो 6 मार्क्स का है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एनर्जी वाली इक्वेशन डिराइव करके फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पे जाना पड़ेगा. या समटाइम्स अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इट इज कन्फाइंड बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L. Fine. So derive the equation of energy for that body moving freely along the x-axis. Okay. So दो तीन तरीके, बट क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल इन अ बॉक्स वाली थ्योरी ही आपको पूछी है. फाइन. देन आफ्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स तो है, न्यूमेरिकल भी बेसिकली जो एनर्जी वाले इक्वेशन क्वेश्चंस हमने ट्यूटोरियल में किए थे वही न्यूमेरिकल एनर्जी वाले या नॉर्मलाइज्ड कंडीशन डिराइव करनी है वो वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट? न्यूमेरिकल्स ईच ऑफ 4 मार्क्स. हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है इफ द न्यूमेरिकल इज स्मॉल तो वो 2-2 मार्क्स में भी न्यूमेरिकल आ सकता है. ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में ही न्यूमेरिकल आएगा, राइट? 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं. 3 मार्क्स वाले सपोज इफ वी आर आस्किंग, सो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड, राइट? आफ्टर द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हाँ, राइट अ नोट ऑन क्वांटम मैकेनिकल कन्फाइनमेंट. ओके, सो वो 0 डायमेंशन कन्फाइनमेंट, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल कन्फाइनमेंट वो आपको एक्सप्लेन करना है, राइट? या एनी वन मेथड, एक्सप्लेन एनी वन फैब्रिकेशन मेथड इन टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, या सीधा स्पटरिंग एक्सप्लेन करो, लेजर एब्लेशन एक्सप्लेन करो. सो फिगर के साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है. एक्सप्लेनेशन में व्हाट इज द टेक्निक, क्या फैब्रिकेट कर रहे हो, पाउडर में जा रहे हो, फिल्म में जा रहे हो, मतलब कोटिंग कर रहे हो. ओके, इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. ओके, एक्सप्लेन मैंने जब आपको किया तब भी आपको बोला होगा कि वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टेक्निक ना, you have to explain its advantages and disadvantages also, right? So any one of the technique can be asked. Then after applications of nanomaterials, applications of nanotechnology. Okay. Then after the next thing, the third part, that is characterization. Characterization में explain the construction and working of a scanning electron microscope या transmission electron microscope. So आपको figure draw करना है. Figure draw करके you have to mention, you have to explain each and every part along with the function. Say for example, scanning electron microscope में पहला part जो है वो it is an cathode. Okay, thermoionic cathode. So what is the function of cathode? It emits the electron. Then anode, right? Then scanning coil. वो सब का explanation आपको देना है. What it is, what is the function in the particular apparatus, right?
फिर advantages and disadvantages. Okay, then difference between the scanning electron microscope and transmission electron microscope. देखो 5 marks का difference है, then 5 points, 5 important points are expected. Okay, if the difference is of 5 marks, then you are supposed to write 5 important difference between the two apparatus. Okay, ऐसा नहीं कि SEM stands for scanning electron microscope, TEM stands for transmission electron microscope. That is not an important point. You have to write the 5 important points. You can write in that you can write the room, volume of a room, volume of an auditorium, and the shape of an auditorium, right? ये आपको explain करना है और descriptive type का होगा. Then you will be having the numericals also based on L is equal to 10 log I by I0 and Sabine's formula based numericals. Lots of numericals you will be having. Then explain different methods for the production of the ultrasonic waves in the laboratory. So आपको दो ही method explain करनी because we have studied only two methods, right? Magnetostriction method and the piezoelectric method. आपको क्या नो मैंने video call करे मैडम unknown number से, right? So hello. Voice call करे. So you have to explain the magnetostriction method and the piezoelectric method, right? जो हमने लिया था, what is magnetostriction effect? वो छोटे से diagram के साथ ferromagnetic material is kept in an alternating magnetic field or rods that's vibrating, etc., etc. उसके advantages, disadvantages, piezoelectric method, what it is, and how the ultrasonic waves are produced, right? So एक ये question आ सकता है. The production of the ultrasonic waves in laboratory दोनों साथ में होंगी या simply piezoelectric effect. Then after explain the experiment used to find the velocity of an ultrasonic waves in a liquid. Okay. Yeah, acoustics grating. What is acoustics grating? Explain with its principle. Okay. जो last part हमने देखा था. Okay.
कि एक cylinder लिया, water was transparent cylinder, water was filled inside it, and then at the bottom you have a piezoelectric generator, at the top reflector, and when the ultrasonic waves passes through it, there will be the reflection of the sound waves, the interference होता है. Because of the interference, there is a periodic variation in the density of a liquid, okay, and that gives the rise to a grating, and because of which we get the diffraction of the light, right? So ये equation जो है वो 5 marks का आ सकता है. Acoustics grating, okay, and the numericals, right? Acoustics grating, yeah, experiment to find the velocity, experiment to find the wavelength of the ultrasonic waves in a given liquid, okay, ये सब एक equation में आएगा. Then after nuclear physics, न्यूक्लियर फिजिक्स में फिशन फ्यूजन तो मतलब पूछने के कोई स्कोप आई डोंट थिंक, बट in nuclear physics, general features of a nuclear reactor, okay, which was a self-study question for you. So you have to explain each and every part of a nuclear reactor with a figure. Okay. Then after the GM counter, construction and working of a GM counter, Geiger-Müller counter. They explain the counter that gives the that can detect all the radiations at the same time, all the nuclear radiation at the same time, right? So Geiger-Müller counter. Then construction and working of a scintillation counter, yeah, the counter that is used for detecting the gamma radiation. Scintillation counter is a counter that is used for detecting the gamma radiation, right? So यहाँ पे आपको figure draw करना है, इसका construction explain करना है, and working also you will be explaining, right? That is in the nuclear physics. तो तीनों questions 5 marks के, GM counter, Geiger-Müller counter, general feature of a nuclear reactor. Then after that, in the after the nuclear physics, plasma physics. What is plasma? Differentiate between the plasma gas and the ordinary gas. दो marks का question. Differentiate between plasma and ordinary gas. Van Allen radiation belt. Explain pinch effect. Right? So, of course, means in pinch effect, you need to tell that pinch effect is not a desired effect, right? We need to keep an plasma cylinder in the presence of an external magnetic field. If that is not done, there is a possibility of a pinch effect. Now, why? What happens in a pinch effect? Because the charge carriers are free, they will be moving in a plasma cylinder, due to which an electric field will be produced, which in turn generate the magnetic field. So because of this electric force, yeah, the magnetic force, the particle may exert the pressure on the walls of the cylinder. So due to which the kinks and clinks are formed, the necking effect can also be produced, which lead to the blast of the cylinder. So in order to prevent the pinch effect, the plasma cylinder will be kept in a magnetic field which is higher than the magnetic field is produced inside the plasma cylinder, right? So this effect, due to which there is a blast of the cylinder, is known as a pinch effect, right? Then what is a Van Allen radiation belt? How the Van Allen radiation belt are created? Because of the ionization of the solar flares that are coming near the surface of the earth, right? So after the plasma and nuclear physics, क्या बाकी रहा? Vacuum. So vacuum में what is vacuum? An empty space, a low pressure, right? Vacuum is an empty space, or it is related to the low pressure. Then after, or directly pumping, diffusion pump, rotary pump, construction and working of a roughing pump. Rotary pump is also known as a roughing pump, right? A pump that is used in a first stage. Vacuum create करने के first stage में always a roughing pump is used. You can tell it as a rotary pump also, या rotary vane pump also. Okay, veins होती है इसलिए. So उसका फिगर ड्रॉ करना है, एंड कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग एक्सप्लेन करना है. Similarly, a diffusion pump, okay, second stage, and then after iron pump will be the third stage. प्रेशर की रेंज क्या होती है? जैसे रफिंग से 10 to the power -3 टोट तक जा सकते हैं.
then with the help of the diffusion pump we can go till 10 to the power -7 या -6 torr, and इससे -14 तक ion pump से आप जा सकते हो, right? Then after the gauge is ion gauge, right, which is used for measuring the pressure. एक ही gauge हमने ली थी, right? So that you will be explaining. Fine. So almost I think सभी क्वेश्चंस मैंने ले लिए, कुछ बाकी नहीं रहा है कोई चैप्टर, ठीक है? Fine. So all the best. We will be meeting in lab viva then. लैब वाइवा में आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकल वाइवा में मिलेंगे. फिर एग्जाम के बाद हम लोग पहचानेंगे. या श्योर, आई विल बी शेयरिंग इट. ओके, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी. 1 घंटे के बाद आएगा. सो एग्जाम तक नाउ वी आर स्ट्रेंजर्स. आफ्टर एग्जाम मिलेंगे सेकेंड सेम में, अगर आप ऑफलाइन आए तो. Fine. So it was nice teaching you. Very good experience. हम कल प्रैक्टिकल का लैब आप लेने वाले? आप बताओ, आपको चाहिए तो मैं ले लूंगी. It's your choice. If you wish, I can take, or if you don't want. और सर बोल रहे थे आपकी बैच में से भी कई बच्चों ने सबमिट नहीं किया है, अभी फोन था, तो प्लीज सबमिट योर लैब वर्क. ओके, विदाउट फेल यू प्लीज सबमिट योर लैब वर्क. डोंट फॉरगेट टू सबमिट इट. ओके, अगर नहीं किया है तो कंप्लीट करके लैब वर्क सबमिट कर देना. So fine then. Wish you all the best. Okay, in case of any queries, you are free to mail me. I'll try to solve your queries. जहाँ तक possible होगा, I will solve your queries. मैम हाँ. मैम ये ऑफलाइन ही होगी क्योंकि वो बुक भी करना है स्टे के Yes, लिए. आपको मेल नहीं मिला है, it's offline only. और लैब मतलब ऑफलाइन सेकंड नहीं है. नोटिस तो आ गई थी ऑफलाइन की. हाँ, so it's offline only. ओके. अभी तो केसेस डाउन जा रहे हैं, and it is decided by the university. In any case, the exams, the semester end exam will be offline. ओके मैम. Okay, so have a practice of writing and writing the descriptive questions also, क्योंकि in university you have to write the descriptive questions. So वो भी थोड़ी practice कर लेना. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो. मैम एनी आइडिया सेकंड सेम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? देखो, फरवरी तक तो ऑनलाइन ही होना चाहिए. अभी कुछ मतलब we have not been given any instruction, but for the higher semester students it is told that you will be having the online semester till further notice. ऐसा मेल आया है, कल ही गया है स्टूडेंट सेक्शन से, राइट? लैब एंड थ्योरी वर्क यू विल बी डूइंग ऑनलाइन till the further notice. But university is in a mood of starting the offline classes soon. क्योंकि देखो, अगर ऐसे ही केसेस डाउन गए then you will have the offline classes. ओके मैम. मैनेजमेंट इज इन अ मूड ऑफ स्टार्टिंग ऑन ऑफलाइन क्लासेस. एक बार गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए उसके बाद, ठीक है? सो आई कांट टेल एनीथिंग, वो कंफर्म मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये कंफर्म कल एक मेल गया था कि यू विल बी हैविंग दी ऑनलाइन क्लासेस. ऐसा
Okay, ma'am. Okay. So bye and take care. Submit your work if you have not submitted. Okay. So wish you all the best. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, welcome. Thank you, ma'am. Okay.